बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं AMB न्यूज और मैं हूं आपकी मेजबान नाइला भट्टी। शामिल करते हैं आज की अहम खबर। मारूफ बैनुल-अक़वामी फलाही और समाजी तंजीम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड डेवलपमेंट के ज़ेरे एहतमाम एक तारीखी अमन और हम आहंगी कॉन्फ्रेंस बरतानवी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में मेंबर बरतानवी पार्लियामेंट मोहम्मद यासीन की सदारत में मुनक़िद हुई, जबकि मेज़बानी के फ़राइज़ नामवर कश्मीरी दानिश्वर और सदर इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड डेवलपमेंट डॉक्टर सरदार मोहम्मद ताहिर तबस्सुम ने सर अंजाम दिए। इस अहम बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का मकसद पाकिस्तान और बरतानिया ताल्लुकात और मसला कश्मीर के लिए बरतानिया के किरदार को मज़ीद उजागर करने के साथ साथ बरतानवी पार्लियामेंट में पाकिस्तान और कश्मीर की मौसर आवाज़ बनने वाले मेंबरान हाउस ऑफ लॉर्ड्स, मेंबरान बरतानवी पार्लियामेंट और मुक़्तदिर कश्मीरी और पाकिस्तानी रहनुमाओं की नुमाया खिदमात को सराहते हुए उनको एवार्ड्स और मुख्तलिफ तौसीफ़ी असनाद के ज़रिया से हौसला अफजाई करना था। इस मौका पर मेज़बान डॉक्टर सरदार मोहम्मद ताहिर तबस्सुम का कहना था कि तारकीन वतन पाकिस्तानी और कश्मीरी अपने मुल्क के हकीकी सफ़ीर हैं, जो यहाँ रहते हुए अपने मुल्क को कौम के खिलाफ चलने वाले मनफी प्रोपेगेंडा को ज़ायल करते हुए मुस्बत चेहरा पेश कर सकते हैं। उनका कहना था कि हमें इज्तमाई और इनफरादी सतह पर पाकिस्तान और कश्मीर की बाहम लाबिंग और सियासी, माशी और इक़्तिसादी फ़वाइद के हसूल के लिए कोशिशें जारी रखना होंगी। बरतानिया से मुतालबा किया कि वो दाई अमन कश्मीरी हुर्रियत कायद यासीन मलिक की रिहाई के लिए भारत पर जोर दें। इस मौका पर लॉर्ड कुर्बान हुसैन, चेयरमैन लेबर फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर MP एंड्रयू गिवन, मेंबरान बरतानवी पार्लियामेंट पावल ब्रिस्टो, सैम टैरी, खालिद महमूद, ताहिर अली, तनमनजीत सिंह ढैसी, डॉक्टर खुर्शीद अहमद, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स लियाकत अली, MB शराज खान, रेहाना अली और दीगर ने खिताबात करते हुए पाक बरतानिया ताल्लुकात और मसला कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली रोशनी डाली। इस मौका पर मौजूद मेहमानान ग्रामी, मेंबरान ऑफ पार्लियामेंट्स और SM इरफान ताहिर को कम्युनिटी खिदमात, पाक बरतानिया ताल्लुकात और मसला कश्मीर के लिए लाजवाल खिदमात पर एवार्ड और तौसीफ़ी असनाद, इंस्पायर्ड स्फीर अमन सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी, पाकिस्तान के इस्तेहकाम और आलमी क़याम अमन के लिए ख़ुसूसी दुआ भी की गई। नाइला भट्टी, हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लंदन। Good discussion about peace and harmony around the world, which is very important. We highlighted the issue of Kashmir, where the Kashmiris are suffering. We highlighted the issue of the Kashmiri leader Yaseen Malik, who is in Indian prison, and we asking the Indian government to look into his case, and many of the Kashmiris who are in prison, to give them some relief. Well, it's been fantastic again to speak at this conference here in the Palace of Westminster here in London. It's absolutely vital that these issues of human rights abuses and self-determination in Indian-occupied Jammu and Kashmir continue to be raised. As a Member of Parliament for Peterborough, I will not shy away from that duty. I will continue to talk about this and make sure people understand what's going on in that part of the world. We're here today in Parliament. We've just had a very busy conference. Many MPs from a number of parties, not just the Labour Party, speaking today. A peace and harmony conference, trying to build dialogue, trying to build a pathway forward for justice for the people of Kashmir, because the issue of Kashmir and freedom for the Kashmiri people is one that's so important and needs to be kept alive here in Parliament as well. Future trade deals in that part of the world, on the Indian subcontinent, have at their heart human rights attached to any agreements that come about, and that includes tackling and looking at the issue of Kashmir. It should not be swept under the carpet because of the opportunity of creating a better business relationship. I think it's important for us to look at the issue of human rights and civil liberties, but we shouldn't use it as a political tool. Well, human rights are far too important to be used as a political tool. They should be done where there's evidence, and when the evidence is produced, we should all make sure that that stops, whichever government is doing it. And I would want to focus people to India, where the continuous abuse of women, of people, of men continues all the way along, and we want to stop that. Indian occupying forces are picking people up there from their homes, torturing them and killing them. At the same time, there are thousands of prisoners in their prisons, and what Indian government is doing is giving them either long sentences, or even in the case of Yaseen Malik, they are turning their life sentences into death sentences. I think this is something which is not acceptable, and that the world should rise up and ask India
to stop behaving like this and release all the Kashmiri prisoners and give them the right of self-determination. Across the globe is as important as, in Britain, so is in Kashmir. I mean, we really feel for these people, and they should get their justice and their voices should be heard. It's a wonderful platform where they're striving and bringing forward these voices to the British Parliament and making sure that these voices are heard, the message is organized and it's stand forward, and hopefully we can do something lucrative and productive for the generations in Kashmir. مجھے آج بہت خوشی ہوئی ہے کہ ہماری پیس اینڈ ہارمنی کانفرنس میں بڑے اچھے اور خاصی تعداد میں ممبر پارلیمنٹ آئے ہیں اور انہوں نے کشمیر کے حوالے سے اور امن اور ہم آہنگی کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے وہ قابل تحسین ہے. یہاں کا کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ لاٹھی کے ساتھ یا گولی کے ساتھ کبھی بھی حل نہیں ہوا، نہ ہونا ہے. صرف آپ کو ڈائلاگ کرنے ہیں، ڈائلاگ کشمیر کے لیے ڈائلاگ، فلسطین کے لیے ڈائلاگ، اور جہاں پر بھی پرابلمز ہیں وہاں پر آپ کو ڈائلاگ ہی کرنا ہو. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں ANB نیوز.